प्रोबेबिलिटी ओ लेवल और IGCSE के लिए प्रोबेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आज स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज़ द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कि आप यूजुअली डेली लाइफ में डिस्कस करते हो कि क्या चांस है एक चीज़ का होने का, वो प्रोबेबिलिटी है। उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। सैम्पल स्पेस जिस तरह हो गया, सैम्पल स्पेस मींस ऑल द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर आप कॉइन टॉस करो तो क्या सैम्पल स्पेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आती हैं, या हेड्स या टेल्स, ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस है। इस तरह अगर डाई बेसिकली जो हम लूडो खेलते हैं और अक्सर हम उसको डाइस कह रहे होते हैं, वो प्लूरल है। अब एक से ज़्यादा डाई हो तो दैट्स डाइस, दो डाइस होते हैं, एक डाई होता है। तो अगर आपने डाई रोल किया है तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, वो तमाम उसकी सैम्पल स्पेस। इसी तरह अगर आप कार्ड्स खेल रहे हो, पत्ते, और आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स जो हैं वो तमाम के तमाम 52 कार्ड जो हैं वो सैम्पल स्पेस है, ठीक है। अब उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाले हैं दैट्स ये क्लब्स हैं, और उससे सेकंड नंबर वाले स्पेड्स हैं, तीसरे हार्ट्स हैं, और ये फोर्थ वाले जो हैं ये डायमंड्स हैं। इनके नाम आने चाहिए। इसमें से हार्ट्स और डायमंड्स तो ईजी हैं याद रखने, जो थोड़े बहुत मुश्किल हैं समझने या याद रखने वो आई गेस आपको ये होंगे, विच आर क्लब्स और ये स्पेड्स, ठीक है। ये याद रखने ज़रूरी है क्योंकि आपको कई क्वेश्चन में ये आ सकता है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ। तो वंस अगेन फेयर डाई इज रोल्ड। फेयर का मतलब है कि उसमें कोई बनावट में गलती नहीं है। तो ये नहीं है कि हर बार आप रोल करो तो ज़्यादा चांस हो 6 आने का या 2 आने का या 1 आने का। अगर फेयर है तो उसके क्या चांसेस हैं, आप कहोगे सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, और उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। सैम्पल स्पेस को टोटल नंबर से कंफ्यूज नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6। क्या, 1 से लेके 6 तक। तो सैम्पल स्पेस में जब आप कहोगे तो 1 2 3 4 5 6 कहोगे। जब आप क्वांटिटी बताओगे यार पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो वो सिर्फ 6 हैं। सिमिलरली आप इमेजिन करो कि ये एक बैग है, इसके अंदर 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। इनके अंदर से क्वेश्चन में गालिबन यही है कि हाँ सैम्पल स्पेस क्या है और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। सैम्पल स्पेस आप कहोगे जी ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट वाइट, ठीक है। 2 दफ़ा बी लिख लो, 3 दफ़ा डब्ल्यू लिख लो। और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 5। 2 दफ़ा ब्लैक आ सकता है, 3 दफ़ा वाइट आ सकता है। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज गोइंग टू लुक लाइक, बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 है। एक 2 डिजिट नंबर है, रैंडम सेलेक्ट करते हैं। 10 से लेकर 99 तक टोटल 2 डिजिट नंबर होते हैं। 9 भी सिंगल डिजिट है और 100 भी 3 डिजिट है। सिर्फ 2 डिजिट जो है एंटायर मैथ्स के अंदर जो 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं वो 10 से 99 है। इसकी मैं अगर आप सैम्पल स्पेस पूछूं, ये मैं रैंडम एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, पहले कॉइन की, फिर कार्ड्स की, फिर ये बैग की, और अभी नंबर्स की, कि सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो 10 से 99 क्या सैम्पल स्पेस है, आप सारे नंबर्स मेंशन करोगे 10 से लेके 99 तक, जिस तरह ये हुआ है, ये आपके तमाम पॉसिबल आउटकम्स है। सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो वो आपका तरीका क्या है करने का। यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं 99 में से 10 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। 99 में से अगर आप 10 माइनस करो तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये आएगा 89 हमारे पास, जबकि पॉसिबल आउटकम्स 10 से लेकर 99 तक 90 हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ। इमेजिन करो कि आपको मैं ये 10 से 15 पूछता हूँ कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 15 माइनस 10 5 नंबर है, बट ये 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो आप क्या करते हो, जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो ना उसमें एक ऐड कर देते हो, तो उससे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो 10 से 99 भी इसी तरह आप क्या करोगे, आप करोगे ठीक है नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 99 एंड एट द एंड आई विल ऐड 1। तो आपके 90 टोटल नंबर्स हैं 10 से 99। तो ये आपके सैम्पल स्पेस अगर पूछा जाए तो आपने सारे मेंशन करने। ऑब्वियसली अगर नंबर बहुत बड़े हो तो आप इस तरह अंदर डॉट 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 लगा सकते हो। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूछा जाए तो वो आपने तादाद या क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। ये आंसर है इसके। नाउ वील मूव ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, वंस अगेन द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा, इवेंट कहते हैं कोई भी एक जैसे आप कह लो आउटकम जो आप चाहते हो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, आपने कॉइन टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, अब इवेंट की जगह हमने उसको हेड्स कह दिया, तो क्या चांस है कि हेड्स आएगा? फेवरेबल आउटकम क्या है? आप न्यूमरेटर में क्या रखते हो? न्यूमरेटर में आप रखते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई, तो कहोगे जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक ही होता है, हेड तो एक ही है, या हेड या टेल आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2, तो 1/2, दैट इज आवर आंसर। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला नज़र आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो सिंपली है जो आपको चाहिए, जो इवेंट आप देख रहे हो वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ नीचे। ये 0 से 1 जो एक स्केल गिवन है ना, ये क्यों बनाया हुआ है? बिकॉज आपकी कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल, प्रोबेबिलिटी स्केल हमेशा 0 से 1 के दरमियान होता है। प्रोबेबिलिटी स्केल आपको बताता है कि क्या चांस है, जितनी ज़्यादा वैल्यू 1 के करीब होगी उतना ज़्यादा चांस है किसी एक चीज़ का होने का, जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी उतना कम चांस है। तो फॉर इंस्टेंस इफ आई आस्क यू के जी हेड जाने का क्या चांस है, तो आप कहोगे 50-50, तो इसलिए देखो हेड्स राइट इन द मिडल, 1/2 इज़ 0.5, और अगर आप उसको कंपेयर करो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस तो 50%, और प्रोबेबिलिटी स्केल पे देखो तो 0.5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए, परसेंटेज ऑल द वे 100 तक जा सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े आने का क्या चांस है? तो ये देखो, ये जो नीचे बार बनी हुई है, 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, ये डाई की बात हो रही है कि अगर आप डाई को रोल करो तो आपको लूडो में फॉर इंस्टेंस आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो, आपको 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या चांस है 2 से बड़ा नंबर आने का? 4 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 6, तो आप लिखोगे 4/6 एंड दैट्स योर प्रोबेबिलिटी 4/6। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इस प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में चेंज करो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपका आंसर आएगा 200/3 या 66.6%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्केल 0 से 1 तक, और क्या कहते हैं परसेंटेज, यू शुड बी एबल टू वर्क इट साइड बाय साइड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज 4/6। Remember, we found out 4/6, or what you can do is simply say 66%. So a probability scale and percentage scale works side by side. So what's the probability of getting a number probability of getting exactly 2? If you go back to all the possible options, what is the probability of just getting this 2? You're going to go back to this formula, number of favorable outcomes. How many favorable outcomes do you have? Now you need probability of getting a number 2. There's only one number 2 available out of a choice of 6, and since the total possible options of 6, so 1/6. Now 1/6, let me show you on a calculator. We are going to say 1/6, 1 divided by 6. If I were to change it into percentage, I will multiply it with 100. That's 50/3. 50/3. 50/3 once again. Wait, let me convert that into decimal. 16.6. That's 16.6. So if I were to write that down in terms of percentage, I'll say 16.6, or if I were to write it in form of a probability, I'll say 1/6. Right? Making sense? So probability should always be less than or equals to 1. You should probably note this down. Probability should always be less than or equals to 1. It should be between 0 and 1. It should not be below 1. I mean, can be negative. And probability obviously cannot go beyond 1, because 1 represents 100%, a short chance of something happening. For instance, let's take an example of 1, a probability of 1 or 100%. I ask you, what's the probability of getting a number, any number, from 1 to 6 when you roll a die?
obviously you're going to get some number, right? So probability of getting, for instance, any number, I can write it down like this: probability of getting any number from 1 to 6 when you roll a die is 6 by 6, which is equals to 1, or 100%, because if you multiply this with 100 to convert it into 100%, right? What is relative frequency as an estimate of probability? Now, relative frequency is another name for probability. Do not get confused. Probability calculated from repeated trials of experiments is the definition, but I'm going to break it down even further and explain what relative frequency means. Take a look. Okay. So imagine, read the part in red. Imagine if you toss a coin 20 times, and what is the probability of getting a head? Now 20 times, in order to understand 20 times, let's just try to understand once. If I toss a coin once, what is the probability of getting heads? 1 out of 2. So if I were to toss a coin 20 times, I am theoretically supposed to get 10 heads out of a total of 20 times, right? Because if I am supposed to get one head every single 1 out of 2 chance of getting a head every single time I toss a coin. If I toss a coin 20 times, what is the chance of me getting heads? If it's 50% of 1, it's 50% of 20. So basically what I'm trying to say is 1 by 2, that's a chance of getting heads on one toss, into 20, because I'm tossing it 20 times. So I'll get 10 heads. Even if this doesn't make sense, let me give an example, a smaller example. Imagine if I toss a coin 10 times. We just discussed that there's a chance of getting heads half the number of times. So I should technically get heads 1, 2, 3, 4 and 5 times. Half, 1 by 2, right? And I should get tails 5 times as well if I'm tossing it 10 times. Now I've changed example from the previous example. If I'm only tossing it 10 times, I should get 1, 2, let me mark it in a different color, 1, 2, 3, 4 and 5. So basically half over, right? This is theoretical knowledge. But if I actually experiment it, if I toss a coin 20 times and every single time I toss it, I catch it and I see what I got. And if I notice I got heads 11 times instead of 10, why is there a discrepancy? Why is there a difference between the actual number of times I'm getting a coin, getting a heads, and the theoretical number of times I should be getting a heads? This difference is between theoretical and experimental probability. So experimental probability is relative frequency. Now why should you know relative frequency? Because in a couple of times what's going to happen is the question is going to mention relative frequency, and if you've never heard of it, you would not know that they're referring to experimental probability. Okay then. I would want you to read the question while I fix this question. A card is drawn at random from a box. उसमें cards हैं 1 से लेके 12 तक. Find probability of drawing a 7. So we've got 1, 2, 3, 4, 5 all the way up to 12. What is the chance of getting a 7? There's only one 7 out of a total of 12. So we're going to say it's 1 by 12. What is the chance of getting an even number? How many even numbers do we have? 1, 2, 3, 6. You're going to say 6 by 12. That's the chance of getting an even number. What is the chance of getting a prime number? Prime numbers are numbers which are only divisible by itself and the number 1. So 2, 3, 5, 7, 11. I am sure I haven't skipped any prime number. So that's 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of 12. So chance of getting a prime number is 5 by 12. The chance of getting a perfect square. Now what's a perfect square? A perfect square is a number obtained by multiplying two same numbers. So 1 into 1 is 1, which is a perfect square. 2 into 2 is 4, that's a perfect square. 3 into 3 is 9, that's a perfect square. And 4 into 4 is 16, that's beyond our range. So the only perfect squares that we have are 1, 4 and 9.
So 1, 4 and 9 makes 3 out of 12. Now you can obviously always simplify these answers and come up with simplified values, or you can leave them as it is. What is the chance of getting a negative number from a pack or set of cards which does not have a negative number? 0. What is the chance of getting a 13, a number less than 13? Obviously, if all the numbers that exist are less than 13, the chance of getting a number less than 13 is 1 by 1. Wait, hold on, not 1 by 1. It's 12 by 12, which is equals to 1, or which is equals to saying 100%. Obviously, you will get a number less than 13 because all the numbers that exist are less than 13. I've given you an entire set of cards, a deck of cards. A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. The reason I pasted this picture over here is that you would not be otherwise able to do these questions, of course, if you do not know a pack of 52 cards that well. So here we go. A black card. What is the chance of getting a black card? There are 13 black cards of clubs, 13 of spades, 13 red card of hearts, 13 red cards of diamonds, and that makes it 52. 13 fours are 52. So what is the chance of getting a black card? You are going to say that's 13 over 26, 13 by 52 plus 13 by 52 is equal to 26 by 52. I added these two 13s and divided them by 52 because total number of possible options are 52. What is the chance of getting a red ace? This is an ace and this is an ace. There are only two red aces. So what is the chance of getting these two? You're going to say 2 by 52, and that can obviously get simplified to 1 by 26, but you can leave the answer as it is as well. This can also simplify to 1 over 2. What is the chance of getting a diamond? How many diamonds do we have? 13. So this can be written as 13 by 52 or 1 by 4. Right? And what is the chance of not getting a diamond? Not a diamond. If 13 are diamonds, the rest of them are not diamonds. This, and this value. So you can say 39 by 52 are not diamonds. So there are two methods to go about this for the last part. Either this one, which is direct observation, you can simply count up all the numbers which are not diamonds, or count up all the cards which are not diamonds and add them up. Or Cambridge requires you to be able to subtract the previous answer from 1, because if you subtract 1 represents 100%, right? If you subtract the answer for a probability of getting a diamond, which is 13 by 52, from 100%, the value that you're going to be left with is going to be the probability of not getting a diamond. Making sense? So 1 minus 13 by 52. इसका LCM क्या होगा? इसके नीचे भी 1 है, तो 1 into 52. This is into 52 as well. 52 into 1 gives us 52. 13 comes down as it is, and since we took the LCM, the denominator is the same, you're going to write it as it is. 52 minus 13 is 39, and 39 by 52 is the same as the answer that you got above. Now, why did we do so much working for an answer that we had already gotten? That's where you just have to learn a concept which Cambridge requires you to do so, because you might be required to calculate values based on this. In the next video, we'll be doing probability of combined events, addition, law probability, multiplication, law probability, and so on and so forth. Hope it helped. Khuda Hafiz and take care.